सो मोनाली, सैलरी कितनी थी? तो अराउंड $5,000 to $6,000 अ मंथ रहती है। What did you really miss about India or when did you really miss India? कि दिवाली मनानी है घर पे, शायद हमने कभी ऐसे ना इतनी मनाई दिवाली नहीं हो। मनाई हाँ। But I want to ask, what did you hate about US? आई थिंक अगेन इट्स रिलेटेड टू रेसिज्म। लाइक आई सेड कि काम पे मेरे को शायद इतना नहीं महसूस हुआ, बट यू सी कैजुअल रेसिज्म हैपनिंग। India में you are doing DNB surgery. करेक्ट। So do you see a difference between DNB and MS or DNB and MD? आई थिंक दे आर कमिंग ऑलमोस्ट नेक टू नेक। बट इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे DNB कर ली उसके बाद एकेडमिक पोस्ट मिल जाएगी गवर्नमेंट में? DNB की एक तो पहली बात वेबसाइट है NB की, जिसपे सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है, तो पीपल हु वांट टू रीड मोर कैन गो देयर। फेवरेट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? Scalpel. I even have a tattoo of it. Tell me, how did you decide to pick up surgery, especially being a female in a male predominant field? नहीं, इवन इंडिया में भी लाइक मैंने यहाँ पे JRship करी थी GB पंत में, लाइक वहाँ पे मुझे एक दो बार ऐसे कमेंट्स था कि तू लड़की थी इसलिए तुझे करवा दिया। I think good institute, good mentors, Right. good teachers, good research experience, Right. like जो दिल्ली में मिल जाता है conferences से That and is the everything. major benefit of staying in Delhi, and that was one of the reasons I chose DNB in Delhi. और हवा और पानी? हवा वो सब गया तेल लेने 3 साल के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू डेली डॉक्स। जहाँ व्हाइट कोट सिर्फ कहानी की शुरुआत है। तो मैं लास्ट टाइम अपनी कहानी सुना रही थी और हम लोग पहुंचे थे सैलरी तक, तो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं नमन। डन। सो सैलरी मतलब अगर मैं बताऊँ तो अराउंड $5,000 to $6,000 अ मंथ रहती है, तो उसका इंडियन कन्वर्जन जो करना चाहे वो कर सकते हैं। 3-4 लाख होगा आई गेस करीबन, हाँ। बट एब्सोल्यूट अमाउंट में इट साउंड्स अ लॉट, बट वहाँ पे क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग, टैक्सेस, वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूँ कि रेजिडेंट इन इंडिया वर्सेस अ रेजिडेंट इन US, दोनों लोग अपनी अपनी जगह गरीब हैं। गरीब ही है हाँ। गरीब ही है, हाफ गरीब ही रहेंगे। पैसे भी कम है, टाइम भी कम है। टाइम भी कम है, राइट। तो इट्स एक्चुअली उस तरह से ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं है कि वहाँ पे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं इन अ रेजिडेंसी प्रोग्राम। बट वंस द रेजिडेंसी प्रोग्राम इज़ डन, तो उसके बाद जो वहाँ पे इंक्रीमेंट्स होते हैं, लाइक एज अ जनरल सर्जन एंड स्पेशली इफ़ यू डू कंपेटिटिव सुपर स्पेशलिटी लाइक यूरोलॉजी, वहाँ पे बहुत कंपेटिटिव है, तो उस तरह की चीज़ों में देन योर इंक्रीमेंट इज़ लाइक देन काफ़ी ज़्यादा। मुझे वो व्हाट इज काफ़ी ज़्यादा? तो जनरल सर्जरी में आई थिंक द स्टार्टिंग सैलरी कैन बी एनीवेयर बिटवीन $150,000 to $200,000। तो उस तरह से शुरुआत होती है, एंड देन इफ़ यू टेक अ स्पेशलिटी थोड़ा हाई लेवल पे भी जा सकता है। बट दैट कंपेयर टू अ सर्जन इन इंडिया, आई थिंक वो एक मेजर जंप है। तो वंस यू आर एबल टू गो थ्रू दैट स्ट्रगल वाला फेज, विच आई थिंक रेजिडेंसी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यू हैव बीन टू जर्मनी, आई थिंक दैट फेज इज सिमिलर। उसके बाद जो चेंजेस होते हैं आई थिंक वो डिफरेंट है। लाइक इंडिया में यू हैव टू काइंड ऑफ स्ट्रगल फॉर लॉन्गर टू रीच अ फेज वे यू फील लाइक कि हाँ पैसा इनफ मिल रहा है, इफ दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। राइट, आई थिंक ये यू आर राइट। जो ये बताया, जैसे मैं कन्वर्ट करता हूँ 1.5-2 करोड़ होगा, मैंने भी नहीं किया कन्वर्ट, बट 1-1.5 करोड़ तो है ही। एंड आई नो अ फ्रेंड जो ऑर्थोपेडिक सर्जन कंसल्टेंट है वहाँ पे, एंड आई थिंक ही इज अर्निंग, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू आस्क हिम, बट अराउंड $400,000 to $500,000। राइट, इससे उन्होंने स्टार्ट किया है, सो 3-4 करोड़ रुपए पर ईयर। ओके। बट देन अगेन वी हैव टू बी केयरफुल कि वहाँ पे फिर देन अगेन सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग, टैक्सेस आर मच हायर देन व्हाट इज इन इंडिया, तो कंपैरिजन आई थिंक ओवरऑल उसका होना चाहिए। बट येस, It is much more. It is much more. After a while in US, it is much more. After training, it is much more. I would agree with that. That is for sure. There's a period of struggle, like in India, but then after that, the rewards are much better than what you reap in India. We can say that. But what did you really miss about India, or when did you really miss India? Good question. क्योंकि I think most of the times जब मेरे को सबसे ज़्यादा मिस होता था, that was during festivals. राइट कि जैसे 15 अगस्त होता था या 26 जनवरी जब होता था, तो मेरे को याद है जब मैं घर पे सो रही होती थी, सुबह सुबह स्कूलों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी, सुबह सुबह वहाँ पे गाने बज रहे हैं, लोग नेशनल एंथम्स गा रहे हैं, तो इट जस्ट सीम्ड लाइक कि हाँ लाइक कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है। तो 26 जनवरी को आई वोक अप, देयर वाज नथिंग गोइंग ऑन अराउंड, तो इट जस्ट फेल्ट लाइक अ सैड डे कि यू नो कि क्या हो रहा है। दिवाली, होली पे ऑफ कोर्स लाइक इवेंचुअली यू डू फाइंड सर्टेन पीपल जिनके साथ आप मिलके सेलिब्रेशंस कर सकते हो, बट देन अगेन वो जो एक माहौल रहता है पूरा कि दिवाली है, होली है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इंडियन ज़्यादा हो जाते हो उन दिनों, लाइक इंडिया में इतने इंडियन नहीं होते, वहाँ जाके तो दिवाली करेक्ट होली, you दिवाली go above and beyond to celebrate Diwali. Like my sister also, like उसके लिए दिवाली has been always like her most loved festival even in India. But अब जैसे she goes all out
कि दिवाली मनानी है. घर पे शायद हमने कभी ऐसे ना मनाई दिवाली नहीं मनाई बट इट जस्ट बिकम्स बिकॉज यू आर मिसिंग इट थ्रू आउट द ईयर आई थिंक. बट देन वहाँ पे एकदम से आपका इंडियन निकलता है कि आज दिवाली मनाएंगे. But I want to ask, what did you hate about US? So I think a couple of things. One was definitely that lack of ease की जब भी आपका मन करे आप घर चले जाओ, इंडिया आ जाओ, अपने मॉम से मिल लो, पेरेंट्स से मिल लो, अपने क्लोज फ्रेंड से मिल लो. So I think if you are in a different country, but if that country is a little bit closer, तो अगर 3-4 घंटे की फ्लाइट है, you can still do like a weekend trip. But US से इंडिया आना is like 23-24 hour flight if like that's the अगर easiest connecting option. ना हो तो. Yeah, that's the easiest option, earliest option. तो you have to like make out like at least 2 weeks. तो साल 2 साल में कभी एक बार. So I think that was the worst part of living in US कि ऐसा है. And I think दूसरा, I think again it's related to racism. Like I said कि काम पे मेरे को शायद इतना नहीं महसूस हुआ, but you see casual racism happening इधर उधर चलते हुए. non-violent, I know. Yeah. So those Yes, things yes, happen. So I think those two were the major letdowns of living in US. अच्छा, अब now if you had completed your surgical residency, PG पूरी खत्म हो जाती. Right. अच्छा, इस तो वो वाली PG वैलिड होती इंडिया में कि नहीं होती? That degree is valid, but I don't think that government hospitals they acknowledge that degree. If you want to set up your own private practice, or if you want to work at a corporate hospital, you can do that. But Even as a surgeon, can you operate? yes, you can. Okay. You can. अच्छा, एक चीज़ और, जो सर्जिकल रेजिडेंसी थी 5 years की, यू टोल्ड मी, Yeah. और उसमें से 3 साल जनरल सर्जरी थे या 5 साल जनरल सर्जरी It थे? was 5-year general surgery program. And then you would have to But- specialize. Right, but then like I said earlier, that after the first Yeah, 3 years, they give you more and more opportunities to rotate in the subspecialties that you want to go into. So for example, let's say if I like cardiothoracic surgery, so from 4th year and 5th year, I can choose that I will do most of my rotations in cardiothoracic surgery department. और उसके बाद एग्जाम देना पड़ेगा? Yes. MCH का? Yes. मतलब व्हाट्स इट कॉल्ड? MCH It's called a fellowship in US. Okay. तो वहाँ पे super specialty के जो exams होते हैं, it's called a fellowship. But then again वहाँ पे exam नहीं होता है. Like after doing your general surgery, then there are interviews. Okay. There's no exam anymore. But that जो exit exam होता है आपका general surgery residency का, like that exam score is taken into account. ओके, और वो एग्जाम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव? No, that's a Viva. theory होता है प्लस like एक वही पूरा viva Patient वाला मिलता होता है. है. Patient नहीं होता है. Like there are examiners sitting in a room, 3 or 4 अच्छा, examiners. अच्छा. They'll give you scenarios and they'll ask you questions. बट रियल पेशेंट So, नहीं होता है. no, real इंडियन patients. इंडियन पीजी एग्जाम इज लाइक दैट हाँ. कि रियल पेशेंट मिलता है. No, you don't get a real Okay. patient. So once you're done with all of that, then you get a score. It's a pass-fail thing. So if you pass, then it's अच्छा good. अच्छा, गोल्ड मेडल का सीन नहीं है? Not entirely sure. Yes, but कभी that's सोचा ही नहीं. इसी में इसी भागदौड़ में निकल गया कि कंटिन्यू कैसे करें. गोल्ड मेडल के बारे में नहीं सोचा. बट देन वहाँ पे ईयरली भी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं. एवरी ईयर यू हैव टू सिट फॉर वन एग्जाम. And then again, you have to cross a certain percentile. Although they don't stop you from moving forward if you don't perform well, but they expect you to perform decently well in those internal exams. और मेडिसिन की कितनी लंबी रेजिडेंसी है? Medicine is 3 years. 3 years. एंड देन उसमें भी ऐसे स्पेशलाइज करना है? Correct. एग्जिट एग्जाम देना है? Correct. स्पेशलाइज करना है? Correct. बट 2 साल बच रहे हैं आपके. Correct. ठीक है. और इंडिया में यू आर डूइंग DNB सर्जरी. Correct. So do you see a difference between DNB and MS or DNB and MD? So I think it's a little early for me because I'm myself in the training. तो मुझे नहीं पता इवेंचुअली क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं. बट फ्रॉम व्हाट आई स्पोक, जितना मैंने लोगों से बात करी जो लोग इस फेज से निकल चुके हैं, दे एक्सप्लेन दैट एट दिस पॉइंट DNB फ्रॉम अ गुड रेप्यूटेड हॉस्पिटल वर्सेस एन MS or an MD, I think they are coming almost neck to neck. Although the people who are like older, जिनकी थोड़ी पुरानी सोच है कि नहीं MS ही होना चाहिए, DNB उससे नीचे है या ऐसा कुछ है, those people they still exist. But I had spoken with some of my colleagues, and I think you also know this, that they were telling me that they are now consultants. So like a lot of their colleagues are like DNBs and they are working at the same place neck to neck. Right. So I don't think that issue is there anymore. But like for the sake of just providing clarity to the students who are watching this, who might be choosing PG or DNB, I think the focus should be on
द प्रोग्राम दैट कैन गिव यू वॉट यू वॉन्ट रादर देन चूजिंग कि ये DNB मिल रहा है या MS मिल रहा है. अगर आपको लगता है वहाँ की ट्रेनिंग अच्छी है, आप वहाँ पे लोगों से बात करिए जो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट्स वहाँ पर हैं, तो आप उन लोगों से इंटरेक्ट करके देखिए. इफ़ यू फील लाइक इट्स अ गुड फिट फॉर यू, आई डोंट थिंक कि देयर शुड बी अ दैट डिसीजन मेकिंग वाला इशू कि ये DNB है कि MS है. आई थिंक as long as you are a person who knows what to derive out of the program, I think you'll be okay. हाँ, आई थिंक यही इम्पोर्टेंट है. आई थिंक गुड इंस्टीट्यूट, गुड मेंटर्स, Right. गुड टीचर्स, गुड रिसर्च एक्सपीरियंस Right. एंड गुड एक्सपोजर टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी. Correct. लाइक जो दिल्ली में मिल जाता है कॉन्फ्रेंसेस से That and is the everything. major benefit of staying in Delhi, and that was one of the reasons I chose DNB in Delhi. Was because of course my family is here. I know Delhi very well. Most of my friends Oh, are हवा और here, पानी? and it's हवा. वो सब गया तेल लेने 3 साल के लिए. So yeah, I think that those were the major reasons. But one of the major reasons I think of staying in Delhi was like most of the conferences they happen in Delhi, so you can actually attend them, make networks, Right. create networks, and then after you are done with your residency, then it's like easy to kind of slide through into one of those networks and ask, hey, what's going on? बट इसमें एक job क्वेश्चन है, जैसे openings. DNB कर ली, Right. उसके बाद एकेडमिक पोस्ट मिल जाएगी गवर्नमेंट में? So- लाइक कैन यू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर? सो ये मैंने पढ़ा था, ये DNB के अपने DNB की एक तो पहली बात वेबसाइट है एक NB की जिसपे हाँ. सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है, तो Okay. पीपल हु वांट टू रीड मोर कैन गो देयर. बट जब मैंने पढ़ा था तो उसमें ये लिखा था कि एक तो डिपेंड्स कि आपने DNB कहाँ से करी है. सो देयर हैज़ टू बी सर्टेन नंबर ऑफ बेडेड हॉस्पिटल, कि लाइक मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं आता है, कुछ 500 या 700 बेडेड कुछ हॉस्पिटल होना चाहिए. अगर आपने उस किसी जगह से DNB करी है तो आप 2 years की सीनियर रेजिडेंसी करके देन यू कैन अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब. Okay. If you want to become a professor, you go into that route. But if it's less than that, then that number that they have mentioned, then you have to do complete 3 years of senior residency, and after that you can apply. जैसे कि MS के बाद आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, उस तरह से DNB में आप डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते. पहले senior residency पहले आपको करनी सीनियर पड़ रेजिडेंसी करनी होगी. एंड डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल व्हिच यू कितने बेड्स हैं हॉस्पिटल में, वो नंबर एक बार चेक करना पड़ेगा. बट आई थिंक एनीवेज एवरीबडी डज सीनियर रेजिडेंसी आफ्टर MS और DNB एनीवेज, तो एनीवेज दैट्स नॉट अ या मेजर. DM चाहिए, कुछ तो चाहिए. राइट, सो आई डोंट थिंक दैट्स अ मेजर डील ब्रेकर. राइट. सो DNB वर्सेस MS की बात होगी. अब ये बता, DNB का एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, is it more difficult than MS exam? Or if it is, then how difficult? Like pass कितना मुश्किल है? सो आई थिंक मेरे पास कंपैरिजन तो नहीं है क्योंकि मैं DNB कर रही हूँ. मैं उस केस में तो फिर वही बता पाऊँगी जो लोगों से मैंने पूछा है. बट आई नो दैट DNB स्पेसिफिकली पहले जो इसका एग्जाम होता था दैट यूज टू बी एक्सट्रीमली टफ. द कंसल्टेंट्स और the examiners they used to be really tough and pass rate was very low. That's what I heard. हाँ, बहुत कम होता था. लेकिन अब जितना मैंने सुना ओवरऑल DNB passing rate has gone up to 70-75%. So now Almost similar so as the NB has MS. directed the examiners कि आप वहाँ पे इस माइंडसेट के साथ जाएंगे कि आपको बच्चे को पास करना है. यू हैव टू डू मिस्टेक्स टू. तो मेरे कंसल्टेंट ने ऐसा बताया था, मेरे जो मेरे गाइड हैं थीसिस के, कि वो इतना सोच के आते हैं कि हम इतना देंगे. अब उसके बाद तुम जो चीज़ें बोलोगे जो गड़बड़ होंगी वो अब नंबर कम करते हैं धीरे धीरे. सो ऐसा नहीं होता कि वो वहाँ पे बैठे तुम्हें फेल करने के लिए. मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली फेयरली सपोर्टिव एंड दे वांट यू टू पास द एग्जाम इन द फर्स्ट को. मेरे कंसल्टेंट हैं जिन्होंने बहुत पहले दिया था DNB, मतलब आई एम श्योर कुछ 15 साल पहले, 14 to 15 years ago. तो उस टाइम उन्होंने बताया ही हैड टू टेक द एग्जाम 3 times बिफोर ही पास्ड. तो उनके 3 साल बर्बाद हुए थे उस चक्कर में. बट आई डोंट थिंक दैट्स द केस एनी मोर. पीपल डू फेल, बट आई थिंक मेजॉरिटी they keep an agenda to pass the majority. Yeah, in people DNB also exams. fail in MS and MD. Yeah, But like I think 70-75% is is a a great very number. good passing I rate. agree. Yeah. Yes, some advice you want. You have given enough advice, I Yeah. would say. But कुछ advice जो young medicals जो surgeon बनना चाहते हैं, या young surgeons जो अभी just surgeons बने Right. हैं. So I think I would just give out. मैं 2 चीज़ें बोलूँगी जो आई थिंक अगर मुझे पता होती 10 साल पहले when I was making choices, I would have probably made the similar choices but with a different kind of expectation. So I think first one is कि जब मैं कॉलेज से निकली थी आई वाज लाइक मुझे एक ऑसम सर्जन बनना है. यू नो, ऑल ऑफ दोज सर्जन्स सबसे पहले दिमाग में बेस्ट सर्जन बनूंगी मैं, बेस्ट सर्जन बनूंगी. बट देन आई थिंक दैट्स अ गुड स्टार्ट. बट उसके बाद धीरे धीरे फिगर आउट करना व्हाट डज दैट बेस्ट मीन्स फॉर यू, कि आपको ये वाली स्पेसिफिक सर्जरीज करनी है, आपको एक ऑलराउंडेड सर्जन बनना है, आपके अंदर कंपैशन डेवलप करना है. तो आई थिंक ब्रिंगिंग ऑन द बुलेट पॉइंट्स जिस पे एक्चुअली आप काम कर सकते हो, द एक्शनेबल्स. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन योर हेड टू बिकम द काइंड ऑफ सर्जन
यू वॉन्ट टू बी. क्योंकि सिर्फ बेस्ट सर्जन बनना है या मुझे एक लैब कोली 5 मिनट में ख़त्म करनी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, आई थिंक दोज आर नॉट द काइंड ऑफ गोल्स that one should have, at least when you're starting out. Right. Those are all the goals that you could have maybe later on, but I think starting out, just trying to understand what does best mean for you, getting, you know, kind of talking to your trusted people, your mentors, your seniors, and then figuring out कि आपके लिए best क्या है, best, what does that include. So I think that would be one advice I would like to give to anybody who wants to be a surgeon or like really going into any other specialty as well. And the second one would be, जब मैं US गई थी तो I just looked at the good aspects of it, क्योंकि ऐसा था कि नहीं यार मैं तो करूँगी. So I think again there the expectation mismatch था कि वहाँ पे एक्चुअली जाके रहना कितना मुश्किल है, अकेले से मैनेज करना कितना मुश्किल है, डे टू डे स्ट्रगल्स जो हमने थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स की बात की, बट डे टू डे कि आप सुबह उठ को इंडियन चीज़ें नहीं मिल रही हैं आसपास, तो लाइक दोज आर स्मॉल थिंग्स, बट आई थिंक वो धीरे धीरे पाइल अप करती हैं. और डेली ग्रोसरी खरीदना, करेक्ट, खाना बनाना, साफ करना, एंड देन यू आर ऑन योर ओन. सो आई थिंक दोज आर स्मॉल थिंग्स दे बिल्ड अप. सो जब भी हम किसी सीनियर से बात करें कि जानने के लिए कि उनकी सर्जरी रेजिडेंसी उन्होंने कैसे ली, कोई मुझसे भी बात करता है, तो फ्यू थिंग्स दैट आई मेक श्योर कि उनको बताती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट द वर्क पार्ट, वर्क के अलावा भी इतनी सारी चीज़ें हैं, योर सोशल लाइफ, योर पर्सनल लाइफ. सो आई थिंक हैविंग एन ऑल राउंडेड कॉन्वर्सेशन विद हुएवर यू आर टॉकिंग टू हेल्प्स सेट बेटर एक्सपेक्टेशंस इन योर हेड. क्योंकि मुझे लगा था कि मैं बस काम बहुत ऑसम करूँगी तो ऑसम हो जाएगा सब. दैट्स रियली नॉट हाउ इट इज़. देयर आर लाइक 100 अदर स्ट्रगल्स दैट हैपन. So I think these two things, defining who you want to be, like in actionable form, and then the other thing, like having your expectations like better set out than I had mine. So I think those would be the two set of advices I would like to give out. And cutting ki advice you already gave. Yes, cutting. I think I really think we should not be running after cutting because, like we discussed, a well-rounded surgeon is a mixture of hand, heart, and hands. Right, so you have to have a component of all three to become a good surgeon, to become a reliable, a safe surgeon. So cutting के पीछे भागने से I don't think it's going to serve anybody a lot. Any comments on research, India versus US? Yeah, so I think वो ये तो definitely है कि US में it's more research oriented. They actually during the 2 years of residency that I had out of 5. So by the time people were becoming 5th-year residents, they already had so many publications under their belt. Not all again, but the interested ones. They would always provide them with resources. I think problem थोड़ा Indian education system starting से, and then especially medical वाले में, medical system में थोड़ा सा वो है कि enough resources और guidance available नहीं है. But I would like to say in the last 10 years that I have actually seen more and more people who are becoming mentors, who are becoming more caring about कि लोगों को research में जाना है तो कैसे उनको resources provide किए जाएं. So I know a few people who are actually taking lead, who are leading by example. So I think that will improve slowly. But yeah, like in India, there's a lot of scope of research if you are up for it. And if anybody wants to get involved in some, they can reach out to you or me through this platform, right, and I will direct them to the right resources. Even I share the same feeling. Research is an important integral part. Yeah. I think it should be a part of our residencies to begin with, and we need a good supervisor, good resources, statistician, and everybody around us. यहाँ वाली जो thesis होती है जो सब कुछ खुद करना है, from data collection, from patient management, from analysis, publication, writing it up, it's a difficult thing, and then फिर वो standard नहीं maintain हो सकता, is what I think. Agreed. So but like I said, I think there are some resources available out there, so I think it will only get better from here, I think. Okay, so now time for rapid rounds. Okay. Let's do it. So word rounds की जगह rapid rounds लेते हैं. Done. ठीक है? So don't look. Okay. Favorite surgical instrument? Scalpel. I even have a tattoo of it if somebody can see it on the screen. Oh. Nice. Wow. US में कितनी रोटियां बेली? सर्जरी ज़्यादा करी या रोटियां ज़्यादा बेली? I think almost equal. Favorite song during surgery? I think any old Hindi songs. I love old Hindi songs, and they have a very calming nature to them. Like Muhammad Rafi. Oh, that old? Yeah. Okay. Old songs. Dream vacation destination? Dream vacation? I don't know, somewhere where there's a lot of just quiet and peace. It could be anywhere. There's nothing specific in my mind.
Favorite medical show? It used to be Scrubs, but then at one point I stopped. I think I just outgrew the humor that it had, so I stopped watching it. But that was my favorite show. Scrubs or White Coats? Oh, Scrubs, always. One piece of advice to young Monali. You'll get through. Just Nice. persevere. Harder adjusting in USA or harder unlearning and then relearning every Indian way? No, harder in the US. Harder in the US. Coming back to home is always easy. Comfort food? South Indian. Dosa, idli, sambar. Nice. If not doctor, then what? I've actually thought about this question a lot previously as well, but I couldn't come up with any single answer, so I think it will have to be a doctor. Nice. स्टिच लगाने, टाँगे मारने या फिर स्टेपल लगाने? टाँके, हमेशा. हमेशा. हमेशा टाँके. A proud moment in US? When I was accepted for that research position at Harvard. Oh, nice. Yeah. Proud moment in India? When my loved ones, they started kind of trusting me with medical advice. Nice. I think that was a big moment for me. One thing you keep with yourself in your medical kit? Bandits. Balance. If you had a chance to be in a time machine, Yeah. which era would you go back to become a surgeon? Which era? Very interesting. And if possible, which country? Country, I'm not sure, but recently I had read the chapter of thyroid and thyroidectomies, and thyroidectomy used to be considered like one of the most brutal surgeries in the history because you're just like opening up the neck. तब ज़्यादा कुछ idea था नहीं, तो it used to be called butchery. Actually, a lot of times butchers used to do these kind of Oh. surgeries. Would love to go in that era and see कि तब क्या होता था. Nice. So tell me, how did you decide to pick up surgery, especially being a female in a male predominant field? Right. So I think मेरे लिए decision, मेरे life के जैसे most of the decisions they are never based on कि gender oriented है या उस तरह से मैं अपने decisions लूँ. That is because I've seen my mom raise her 3 kids as a single parent. I've seen her do everything by herself. So she has been an inspiration to do whatever I have felt is the right thing to do. But I know that this is a concern for a lot of young women who are trying to get into general surgery or even in medicine for that matter. Right. So I think as long as you're able to create that supportive network around you, it should be okay for you to pursue a career as a general surgeon. The only thing is that you will come across those instances where some of your seniors or your colleagues might make that remark, you know, that कि लड़की है इसीलिए नहीं कर पा रही, या फिर women surgeons होती हैं तो उनको ज़्यादा काम नहीं करने को बोला जाता, उसको छुट्टी दे देते हैं, जल्दी भेज देते हैं. I have heard these things in my career. But again, like, you have to be confident in yourself, and again, a very supportive network who can give that confidence to you when you don't have it. There are those moments. So as long as आपके पास वो लोग हैं जो आपको बोलते रहें कि नहीं तू कर सकती है, I don't think there is any restriction. मुझे ये भी चीज़ बोली गई थी कि after a while you'll have a family life, बच्चे होंगे, then you'll have to take time and ये सब वो सब. So I think again that was an important conversation I had with my now husband, that this is a kind of work profile I'm in, explaining him what all it will take for me, the long working hours, the unpredictable working hours, and then just like kind of trying to get him in the loop. And as soon as he was on board, I think again that made the decision easier for me to both with the marriage and then continuing with my current job profile. So I think those things are the more important things. You bring those people Right. near you who continue to kind of elevate And you have and motivate. confidence, because Yeah. even as a guy we go through these moments. It's not like Correct. But yes, of course, it's more bias. आई थिंक वो एक थोड़ा एडेड बर्डन होता है. आई थिंक जो फिजिकल पार्ट है वो सबके लिए उतना एक्स्ट्रा करना मुश्किल पड़ता है. है कभी, ज़्यादा ही करना पड़ रहा है टू प्रूव. आई थिंक मेरा नमन अब मेरा वो हो चुका है. लाइक आई थिंक इनिशियली था कि वो तो दूसरी extra कंट्री की putting वजह से करना भी तो था. नहीं, इवन इंडिया में भी. लाइक मैंने यहाँ पे JRशिप करी थी जीबी पंत में. लाइक वहाँ पे मुझे एक दो बार ऐसे कमेंट्स था कि देयर वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड डन अ सर्जरी स्किन टू स्किन. लाइक आई नो मैंने बोला था कटिंग के पीछे मत भागो, बट दैट वाज बिकॉज आई वाज काइंड ऑफ लाइक दे वर सीइंग कि मैं इंटरेस्टेड हूँ. एंड देन डॉक्टर अनिल अग्रवाल वाज द HOD एट दैट टाइम इन GI सर्जरी. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ये आज शाम तक रुकेगी. एंड देन ही आस्क्ड वन ऑफ हिज SRs कि आज इसको एक केस कराना है. तो दे मेड मी डू वन. देन बट अगेन दोज काइंड ऑफ कमेंट्स कि तू लड़की थी इसलिए तुझे करवा दिया. राइट. सो बिकॉज JRs को यूजली नहीं करवाते हैं ऐसे स्किन टू स्किन सर्जरीज राइट आउट ऑफ MBBS. तो अगेन आई फेल्ट like defeated कि I thought that was an achievement,
बट इट वॉज काइंड ऑफ टेकन अप एज दैट थिंग कि लड़की है तो करवा दिया. सो आई थिंक वो एक हमेशा रहता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रूव करना है, बट that was in my earlier phase. At this point I'm like अब मैं यही हूँ. You either accept it or you reject it. Like that's your Nice. thing. Yeah. What do you have to comment about women's safety in our medical system? So I can actually first talk about the general safety of the healthcare workers at the hospitals. We have worked at MAMC. We know what kind of environment it was there. And I think काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी similar ही हैं कि सिक्योरिटी नहीं है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स विच मेक यू वल्नरेबल, गंदे रूम्स हैं, पानी साफ नहीं है. एंड देन आई थिंक ये तो जनरल प्रॉब्लम सिर्फ मेल और फीमेल का है ही नहीं, तो सबका प्रॉब्लम है. लाइक इवन यू आर नॉट सेफ एट ऑल. कितने हमारे सीनियर्स पिटे हैं, कितने सीनियर्स पिटे हैं, बिकॉज देयर वाज इजी एक्सेस फॉर एनीबडी टू एंटर द हॉस्पिटल. एंड देन अगेन हेल्थ केयर वर्कर्स में फिर आपका पूरा नर्सेज, ओटी स्टाफ, सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं. बट एज विमेन आई थिंक वो वल्नरेबिलिटी थोड़ी सी एक ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज अगेन आई कैन टेल यू स्मॉल एग्जाम्पल्स. लाइक कि मैं अभी भी ड्यूटी रूम्स में सोती हूँ, लाइक रात में जब भी कभी टाइम मिलता है तो दैट को अलर्टनेस रहती है दिमाग में कि तुम सो रहे हो यहाँ पे. लाइक योर क्लोथ्स विल बी लिटिल बिट डिसहीवल्ड, थोड़ा सा इधर हो जाए, चादर ऊपर है कि नहीं. लाइक दोज काइंड ऑफ थिंग्स दे ऑलवेज रन योर माइंड, बिकॉज यू फील लाइक, एटलीस्ट आई फील लाइक दैट आई एम अ लिटिल वल्नरेबल when my guards are down. And I think that's with all the women that I have spoken with. But that's not specific to surgical specialty per se. I think in general, the women working at the hospital and Apollo, I think, provides a lot of security and a lot of kind of, they're aware about this problem, so their security is up to the mark. And CCTV cameras, they're very helpful. रात में अगर आपको 10 बजे के बाद घर जाना है, so actually drop you home. They have a cab system at Apollo. I don't know if you know or not. No. So after 10 o'clock at night, if you are stuck in the OT for long या कुछ भी और काम था, तो वो लोग अपना एक गार्ड उस कैब में, and one the cab driver, they drop you home. So I think those kind of things, I think people should take these kind of inspiration from places like Apollo. कि हाँ कि like I think that's a very, then also that motivates you कि ठीक है आज रुक जाते हैं काम करने का. Otherwise you are like कि नहीं 5 बजे भागना है. So if you have these kind of services provided by the hospital, it also motivates you कि हाँ ठीक है आज हम काम भी कर लेते हैं, because you are safe. तुम रात में भी आराम से जा सकते हो. So I think in general these kind of things. But yes, as a woman, if you're working a night shift, I think it's always वो एक छोटा सा दिमाग में ना कि आज रात में हॉस्पिटल में हो, तो वो हमेशा रहता है. So yeah, I think a little bit more vulnerable than men, but I also know कि even men are not safe. Thank you Dr. Monali Mohan for coming and इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए. And thank you viewers for watching. कुछ questions है, कुछ comments है, write it down, write to us. We'll be happy to answer. Monali would be happy to answer. And इसको like करो, share करो, subscribe करो, share it with people you think need this conversation, who are planning to become a doctor in US, who are planning to become a surgeon in India. उनके साथ share करो. कुछ doubts हो, please ask us. And a very important thing, if you think you belong here, आपको लगता है आपकी जगह यहाँ पे है, तो please reach out to us and we would be happy to have you as a part of our team. And thank you for watching Delli Docs, जहाँ white coat सिर्फ कहानी की शुरुआत है. Thank you.